Hello students, welcome to my channel. In last video we have discussed law of multiple proportions and law of definite proportions. Now we are going to discuss another term given by Dalton, that is law of multiple proportion when sulfur and oxygen are being used, sulfur dioxide and sulfur trioxide. What does this law mean? Let's have a look. Law of multiple proportion, sulfur dioxide and sulfur trioxide. When sulfur dioxide and sulfur trioxide are formed, the masses of oxygen bear a simple ratio of 32:48 or 2:3. In these reactions, a fixed amount of sulfur is combining with multiple proportions of oxygen to form sulfur dioxide and sulfur trioxide. In 1808, Gay-Lussac put forward a generalization. Note the point. Now the term is for Gaylussacs Law. What does it mean, Gaylussacs Law? Pressure. Which defines the relationship between volumes of gaseous reactants and products. This generalization is known as Gay-Lussac's Law of combining volumes. Note the point, combining volumes. It states that when gases combine or are produced under similar conditions of temperature and pressure, volumes of reacting gases as well as the products bear a simple ratio to one another. For example, when one volume of hydrogen reacts with one volume of chlorine, the result is always 2 volumes of hydrogen chloride. Look at the statement. One volume. Ultimately कितना वॉल्यूम होना चाहिए? 2 वॉल्यूम होना चाहिए. तो 1 वॉल्यूम कितना है? हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम ये होता है. तो अल्टीमेटली जो भी रिएक्शन के पहले है वो भी रिएक्शन के बाद, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वेशन बनाने पे, मतलब रिएक्शन के बाद उनका वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो जाएगा ना. आपने एक वॉल्यूम मिलाया, एक वॉल्यूम क्लोरीन मिलाया, तो अल्टीमेटली 2 वॉल्यूम बनना चाहिए ना. करेक्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलाया था और एक वॉल्यूम क्लोरीन मिलाया था और रिजल्टेंट जाके 3 वॉल्यूम होता. ये पॉसिबल नहीं है. जितना रिएक्टेंट में था उतना ही एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये जो गैलुसैक्स का लॉ है ये बेसिकली दिखा रहा है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स में इफेक्ट नहीं होता है, जो भी होगा कंबाइन हो जाएगा. HCl. Ratio of volumes of reactants and products of this reaction is simple. 112. Another example is when 1 liter of nitrogen gas reacts with 3 liters of hydrogen gas to produce 2 liters of ammonia gas. Note the point. Since all the reactants and products are gases, the mole ratio of nitrogen gas to hydrogen gas to ammonia gas is same as the ratio of the volume of each gas participating in the reaction. अब इस पॉइंट को समझना. अब आप ये मत कहना कि नहीं एक वॉल्यूम ये था, को 3 वॉल्यूम में तो 4 वॉल्यूम होना चाहिए. नहीं, रिएक्शन तो देखो 2 वॉल्यूम कैसे हुआ. ये रिएक्शन को बैलेंस भी तो करोगे. N2+3H2. आप ये कहोगे कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन के साथ जब 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन मिलता है तब जाके 2 वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस होता है. करेक्ट. याद रखेंगे, ये पूरा रेशियो होता है. प्रॉपर्ली देखें ध्यान से. 1:3:2. 1 3 2. 1 कौन है? नाइट्रोजन. 3 है हाइड्रोजन और 2 है अमोनिया. In 1811, बैलेंस. Avogadro suggested that matter consists of 2 kinds of particles, namely atoms and molecules. He defined an atom as the smallest particle of an element, which can take part in a chemical reaction, and may or may not be capable of independent existence. A molecule is the smallest part of an element or compound which is capable of independent existence.
He concluded that since the smallest particle of a gas, which can exist independently, is a molecule and not an atom, hence, the volume of gas must be related to the number of molecules. He proposed a law known as Avogadro's law, which states that under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all gases contains equal number of molecules. For example, 1 volume of hydrogen combines with 1 volume of chlorine to form 2 volumes of hydrogen chloride gas. अंडरस्टूड है ना? For this, 1 वॉल्यूम मतलब समझ गए? ये देखो, एक H2 एक क्लोरीन, तो दोनों मिला कितने हुए? अंडरस्टूड? वॉल्यूम बन गया कितना? 2 वॉल्यूम. ठीक है ना? पूरी बैलेंस रिएक्शन करते हैं तो 2 वॉल्यूम बन गया ना, एक वॉल्यूम ये और 2 वॉल्यूम क्या बन जाता है? ओवरऑल मिक्स्ड हो गया तो क्या बन गया है? HCl. पूरी रिएक्शन को बैलेंस भी करके दिखाया जाता है. to be true, it would mean that the number of molecules in 1 volume of hydrogen, N, will be equal to the number of molecules in 1 volume of chlorine, N. During the reaction, they will form 2 volumes of hydrogen chloride gas, which will contain N plus N, that is, 2N number of molecules. N plus N हो जाएगा. Which means that the number of molecules in 1 volume of hydrogen chloride is equal to N. Thus, proving Avogadro's law. While scientists studied matter and formed the laws of chemical combination, they were unable to answer some questions. For example, why are 2 elements different, or why do elements combine to form compounds? Dalton studied the structure of matter, and in 1808 he proposed a theory to describe the structure of matter. This theory was named after him as Dalton's atomic theory. The theory states that Note all the points. Matter consists of extremely small, indivisible and indestructible particles called atoms. Atoms of the same element are identical in shape, size, and mass. Atoms of different elements have different sizes, masses, and chemical properties. Atoms of 2 or more elements combine in a fixed ratio to form a compound. Atoms can neither be created nor be destroyed during a chemical reaction. Chemical reactions involve combination, separation, or rearrangement of atoms. वेरी राइट. कोई भी एलिमेंट होता है वो इंडेस्ट्रक्टिबल होता है. राइट. अगर हम कह दें कि हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आप बस चीज़ों के अरेंजमेंट्स चेंज करते हैं. राइट. तो क्या कहा जाता है? जैसे हम कहते हैं ना, हमारी सोल इंडिस्ट्रक्टिबल है. क्या मतलब हुआ इसका? कहने का मतलब होता है सिंपली, कोई भी चीज़ जो भी आपकी सराउंडिंग में है, आप उसे डिस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते और कुछ नया नहीं बना पा रहे. ठीक है ना? यानी कि जो भी है वो प्री एग्जिस्टिंग है, और जो भी चीज़ें हैं वो इनडिस्ट्रक्ट ना बोलकर आप कहोगे ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन. बस में कहने का मतलब सिंपली हुआ कि केवल बॉन्ड्स टूटते हैं और नए तरीके के अरेंजमेंट बनते हैं, और नए तरीके के अरेंजमेंट में नया कंपाउंड डेवलप हो जाता है. दैट इज द रीजन indestructible. Scientists used Dalton's atomic theory for a century. However, in the beginning of the 20th century, scientists like Sir J.J. Thomson, Lord Rutherford, and Niels Bohr came up with new findings, which revealed some drawbacks in Dalton's atomic theory.